Hi guys, welcome back to this channel Stock Pro. I'm your host Dr. Seema Jain, a SEBI registered research analyst, and welcome to my space. And we're going to be talking about today some stocks that I've identified for tomorrow or a couple of days, or maybe for the entire week. And we're going to be talking about those stocks, and we'll also be talking about the reasons behind selecting those stocks, right? उससे पहले बात करते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड्स किए, राइट? I'm hoping that you follow me on my YouTube channel. I'm hoping that you're following me on Twitter. I'm hoping that you follow me on my Telegram channel. If you notice, on my Telegram channel, since morning I gave almost like 7-8 trades, and each of them gave massive breakout, right? Starting from Mazda, we gave a buy at 535. It made a high of 620. Then we gave a buy at UFO. We gave a buy at 134. It made a high of 138. Enough point to make good money, and we made good money. BDL, I gave a buy above 784. It made a high of 884, right? Almost full 100 points, right? BEML, we gave a buy at 1887. I got to see what high did it make. BEML made a high of 1930, right? 1930 was the high that it made, right? And then I have given a lot more other stocks. JKIL, right? Let's have a look at JKIL. JKIL, I gave a buy at 206. It made a high of 214, right? So that's the kind of accuracy we have in identifying the stocks. So remain connected. Please share my channel with your friends, with your family, with the people you know in your environment who are losing money in the stock market. Start with investing in the cash. Now, before I go on to, कि मेरा कल के लिए क्या stock selection है, I would like to talk about, कि मेरा favorite segment क्या है. A lot of people trade into Nifty, Bank Nifty. I think most of the people want to trade in Bank Nifty. And that's the reason Bank Nifty is very volatile. And then similarly, even Nifty is very volatile for that matter, but slightly less than Bank Nifty. So I prefer to trade in stocks which move in a direction, but slowly, gradually. I somehow don't like very volatile instruments. So उसके चलते मुझे कैश स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है. और कैश स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको अच्छी खासी लेवरेज भी मिलती है. कई सारे ब्रोकर्स बहुत अच्छी लेवरेज देते हैं. और if your stock selection is correct, you can really make good amount of money. So मेरे को कैश में ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है. उसके कई सारे रीजंस हैं. अगर आप एफएनओ में ट्रेड करोगे, एज आई टोल्ड यू, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है कि बहुत वॉलेटिलिटी होती है. अगर हम एफएनओ के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन राइटिंग होती है. और ऑप्शन राइटिंग जो है एक बाउंड्री डिफाइन कर देती है स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, राइट? इसलिए मुझे एफएनओ के जो स्टॉक्स है उनमें भी मैं थोड़ा कम ट्रेड करती हूँ. आई प्रेफर टू ट्रेड इन कैश स्टॉक्स. अब मैं उसका रीजन भी आपको दे देती हूँ. तो होता क्या है, कई बार म्यूचुअल फंड्स को अपना पोर्टफोलियो शफल करना होता है, राइट? When they have to shuffle their portfolio, they have to take compulsory exit from some stocks and compulsory exit in some stocks. So I prefer to select those stocks where they are taking compulsory entry, right? जहाँ पे वो लोग एंट्री ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें मैं एंट्री लेना प्रेफर करती हूँ, राइट? और बिकॉज वो जो स्टॉक्स होते हैं उनमें धीरे धीरे एक स्लो और स्टेडी मूवमेंट आता है. और दूसरा, एफएनओ की वजह से कोई ऑप्शंस सोल्ड नहीं होते, कोई बहुत वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है. तो इसलिए मुझे जो है कैश में ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है. सो आज मेरे रडार पे कल के लिए 6 स्टॉक्स हैं. पहले हम उन 6 स्टॉक्स की बात करेंगे, फिर मैं आपको उनके पीछे का रीजन दूंगी, राइट? और अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड्स चाहिए, वेयर यू कैन टेक एंट्री, यू कैन टेक क्विक एग्जिट, scalping trades, please remain connected with me through my Telegram channel where I'm super active. And please trust me, we don't charge even a single penny for our research, right? So चलते हैं आज के जो 6 स्टॉक्स हैं उनमें सबसे पहला है Jubilant Food. So first stock that I have is Jubilant Foods, right? Now see here, this is how Jubilant Food looks like. It's stagnant for almost like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trading sessions. It has been range bound. आज मार्केट ऑलमोस्ट 300 सवा 300 पॉइंट्स नीचे गया है निफ्टी, but the stock refused to go below. Rather, it has picked up more momentum.
इसका सिंपल सा मतलब यही है कि स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत जान है और ये ऊपर जाएगा, और इसलिए मेरा इसमें जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा 2890 के ऊपर, एंड मेरा टारगेट ऑफ कोर्स 3000, 3050, 3000, 4000, something like that will remain my target. The next stock that I have on my radar is IGL. IGL is looking very, very good. The way it has taken price rejection from the lower level. And my entry is going to be at which place, right? I'm going to enter at today's high, which is about 396 or 397 is where I'm going to take entry. My first target is going to be 410, right? Maybe few days. It's not necessary that you need to trade intraday, right? All my stocks that I give you here on this channel, which is my YouTube channel, are positional trades, right? So you got to hold them. You need to hold them for a few days, right? So IGL is going to be my second trade where I'm going to take an entry above 397. My stop loss could be about 386 or so, and my first target is going to be 410. Above 410, 420, 430 can also be expected, right? Now, please don't tell me that you gave IGL earlier and it fell from there. देखो, सबसे पहले तो आप अपना रिस्क मैनेज करना सीखो. मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है, 10-12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है. अगर आप केवल 2000 रुपए रिस्क ले सकते हो या 2400 रिस्क ले सकते हो, बाय ओनली 200 स्टॉक्स, राइट? बिकॉज आप अपने रिस्क को मैनेज करिए और स्टॉप लॉस को ऑनर करिए और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट करते जाइए जैसे जैसे स्टॉक ऊपर मूव करता है, राइट? सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है M&M. And it is again the same reason that I have given you for the rest of stocks. It is standing on a very crucial point, right? अगर ये 879 और 880 के ऊपर जाता है तो हमको इसमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट मिलेगा. एक ये बहुत लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और पास 2-3 दिनों से यहीं से रेजिस्टेंस लेगा. सो 880 के ऊपर आप इसमें एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ब्रेकआउट आने की. और फर्स्ट टारगेट हमारा जो इसमें रहेगा वो रहेगा करीब 900 का. स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसमें? स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कुछ 20 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा. फर्स्ट टारगेट विल बी 900, फिर उसके बाद 920 एंड उसके बाद जो फाइनल टारगेट है वो कुछ 980 तक का रहेगा, राइट? ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर टेकिंग एन एंट्री. सो दैट्स माय थर्ड स्टॉक. एक और स्टॉक इसी तरह का है जो बहुत अच्छा लग रहा है, which is Tata Consumer, right? Tata Consumer is also looking extremely good. और एक और रीजन भी है, आई वांट टू डिस्कस इट विद यू. आज मार्केट इतना ज्यादा खुला नीचे, ऑलमोस्ट लाइक 290 और 300 पॉइंट्स नीचे खुला. बट मार्केट में अगर आप देखो तो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेड करते हो. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश पर्सन. मुझे नो मैटर कितना मार्केट गिरे, मुझे बाय का ट्रेड ही करना, राइट? अगर आपको बाय का ट्रेड ही करना है, आपको मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ऐसा नहीं है. व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि आपको वो ढूंढने हैं स्टॉक्स जिनमें बाइंग डेवलप हो रही है. अब ये स्टॉक है जो आपके सामने टाटा कंज्यूमर. आज मार्केट 300 पॉइंट्स खुला नीचे. आप मुझे कैंडल्स देख के कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ? नो, इट डिडंट ओपन गैप डाउन मैसिवली. थोड़ा नीचे गया और वहां से बाउंस आया, राइट? यू सी हियर, आई विल जस्ट शो यू व्हाट हैपेंड. यहाँ पे खुला स्टॉक, फिर थोड़ा नीचे जाके और फिर बायर्स पुल करके लाया, फिर ऊपर ले गए, राइट? इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? बट व्हाट इज द हर्डल? अगर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो क्या हर्डल है? हर्डल है ये बैरियर जो है, ये 825 का बैरियर, ये क्रॉस होना ज्यादा जरूरी है. कल अगर टाटा कंज्यूमर में 825 का बैरियर क्रॉस होता है, आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूव. हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें इस कैंडल का लो विच इज 808. ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. और बिकॉज आवर फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी दिस, राइट? इट मे टेक 1 or 2 days or so, or maybe tomorrow it may happen. The first target is going to be 858, right? Or 860 you can say, and second target could be 885, right? This is what is going to be my second target. It may take couple of weeks, 2 weeks, 3 weeks, so it doesn't matter. As we are entering into a positional stock, it can take few days, few months, whatever time. उसके बाद मेरे पास एक और स्टॉक है मनापुरम, राइट? तो अभी प्लीज एंड तक बने रहिए क्योंकि आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल कि ये सब मैंने स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट किए हैं.
Here is Manappuram, right? Now Manappuram, if you notice, is standing on a very crucial place, right? अगर आप notice करोगे, so this is an accumulation zone, right? And अगर आप price को भी notice करोगे, प्राइस को नोटिस करो आप, धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट? बट व्हाट इज स्टॉपिंग इट? दिस बैरियर ऑफ 127, राइट? अगर ये बैरियर क्रॉस होगा, then I'm expecting a big breakout in Manappuram, right? It may go down as well because a lot of other fin services are actually in distress. So you got to be patient, you got to wait above 127, 128. वहां से आप एंट्री लेंगे. My first target is going to be 145, next target is going to be 160, right? हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा. हम 127 पे एंट्री ले रहे हैं, 120 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? उसके बाद लास्ट स्टॉक है मेरे रडार पे, एक सेक्टर जो मुझे और अच्छा लग रहा है वो है श्री सीमेंट, राइट? श्री सीमेंट और सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है. इसका रैमको सीमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है. बट दिस स्टॉक इफ यू नोटिस इज स्टैंडिंग ऑन अ मल्टीपल मंथ रेजिस्टेंस. अगर ये ब्रेकआउट देता है 25,550 के ऊपर, द फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 25,860. 300 पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे. और अगर ये बैरियर 25,800 का क्रॉस हो जाता है, then I'm expecting 1,000-2,000 points very easily in this particular stock, right? Now, one more thing that you can see very broadly, right? I'm not saying that it is exactly how it looks like. It is forming an inverted head and shoulder pattern, right? A very strong pattern. You know, it's basically a bullish pattern. And if this price range is broken out, you can first expect 300 points, then 1,000, 2,000 points. You can easily expect from the stock Shri Cement, right? तो ये 6 स्टॉक मेरे रडार पे रहेंगे. और तरीका क्या होगा इसमें एंट्री लेने का? You got to wait for about 945 के ऊपर. अगर किसी स्टॉक ने 1-1.5% तक का से ज्यादा का ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, राइट? तो दीज आर माय 6 स्टॉक्स. बट व्हाट आई वांटेड टू से कि अगर मार्केट 300 पॉइंट नीचे भी खुलता है, ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर्स डाउन जाएंगे. मैंने सुबह मॉर्निंग में ही लिख दिया था कि आईटी इज गोइंग टू बी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. बट आईटी स्ट्रेस में था, बट एफएमसीजी वाज डूइंग रियली वेल. एंड देन आई सॉ सम अदर सेक्टर्स लाइक पेपर सेक्टर वाज डूइंग वेरी गुड, शुगर सेक्टर वाज डूइंग वेरी गुड, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर पूरा मार्केट डाउन है तो सारे सेक्टर्स डाउन. एंड इसीलिए इफ आई एम बुलिश, आई विल फाइंड दैट सेक्टर, आई विल फाइंड दोस स्टॉक्स वेयर द मोमेंटम इज कमिंग ऑन द बाय साइड. So इसी तरह के वीडियोस जानने के लिए keep remain connected with us. Join me on Telegram for the live trades. Keep trusting the research that I do for you. It's absolutely free, and get your friends also to trade along with us. Take care. See you. Bye bye.